Hello बच्चों, let us read the question first. Gap between meiosis 1 and 2 is called option A interkinesis, option B interphase, option C dikinesis और option D none of these. Hence इस particular question में हम जो concept use करेंगे that would be meiosis division. We will study the various features of a meiotic division which are as follows. जो meiosis division होती है it is also known as reductional division. इसे reductional division के नाम से भी जाना जाता है because इस particular division में जो number of chromosomes होते हैं number of chromosomes reduces to half after the cellular division, which means जो cells produce होंगे after the division उनके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ हो जाते हैं जो इनिशियली एक पेरेंट सेल में प्रेजेंट होते हैं, विच मीन्स अगर एक डिप्लॉयड सेल अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ मियोसिस तो जो सेल्स प्रोड्यूस होंगे आफ्टर मियोसिस दे विल बी हेप्लॉयड सेल्स, दे विल नो मोर बी डिप्लॉयड सेल बिकॉज उनका जो क्रोमोसोम का कंटेंट है दैट विल बी हाफ, रिड्यूस टू हाफ. मोरओवर जो मियोसिस है इट अकर्स इन two sequential cycles, that is meiosis 1 जो first phase होता है and meiosis 2 which occurs secondly. इन दोनों phases के बीच में there is a small gap, एक small stage occur होती है that is known as interkinesis. It is basically the rest phase. ये एक तरह का rest phase होता है between, it lies between meiosis 1 and lies between meiosis 1 and 2. ये एक short lived stage होता है. It is a short lived stage. Basically interkinesis में एक सेल अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को चेक कर लेता है. If it needs any requirement of protein तो ये उसकी सिंथेसिस कर लेता है. But one of the most important point in interkinesis is there is no replication of DNA. किसी भी तरह की replication नहीं देखी जाती है DNA की. जो DNA replicate होता है that is occurred in the S phase of interphase. उसके बाद कहीं पर भी सेल में DNA की replication नहीं होती है neither in the interkinesis. So now if we look back to the option, so जो gap present है between meiosis 1 and meiosis 2 is that interkinesis? Yes. B interphase. जो interphase होती है वो phase होती है जिसमें एक सेल अपने आप को prepare करता है to undergo the process of division. So this is an incorrect option. Dikinesis. Dikinesis is a substage of prophase 1 of meiosis 1. So this is also an incorrect option. Hence the correct answer is option A interkinesis, which is the gap between meiosis 1 and 2. So I hope you must have understood it well. All the best.